My name is Mandira. Welcome to AglaSem, and today we are going to be doing our unit number 2 for class 8, and that's chapter number 3, why do we need a parliament? So in the previous chapters we've studied about what a parliament is, what a democracy is. We also studied about the major document that we have called the constitution, which is the book of laws. So essentially now we have to move forward and ask ki jo laws and rules isme likhe hain, how are they made, who makes them, what is the role of the parliament. I think by now you've gotten a good understanding of how the democracy works, that we have to go vote for people, elections hote hain, and then they are elected representatives, right? So for example, आपके अपने एरिया का एमएलए होगा या फिर कोई एमपी होगा आपके एरिया के, है ना, तो उनके नाम जरूर आप पता करना अपने पेरेंट्स से, प्लीज आस्क देम. So but the point is that after we have elected these people, what is their journey, what is their role in our country, how do they make laws, what do they do, how does it all happen? So this chapter is going to deal with those sorts of questions. Okay, so let's get started with the first heading of the chapter, which is why should people decide. So again, we've circled back to the discussion we were having in the previous chapters about why in a democracy it is important for people to actually go and vote, है ना? Why should the people decide? So अभी हम इसमें थोड़ा सा एक towards a bit of historical twist भी आएगा यहाँ पर, that हम थोड़ा सा चलते हैं back, जो हमारा forward backward करके in the freedom movement, जो हमारे जब India was colony against with British, so they used to make the laws and we used to obey their laws because they had colonized our nation. So as far as 1855, Indian National Congress demanded that there be elected members in the legislature with the right to discuss the budget and ask questions. So representation is something, मतलब हमारे wanted candidates को आप elect करो and please give them some power. This is what had been going on since 1885. This is what our leaders had been demanding since our country was not even freed, right? So in the Government of India Act 1909, it allowed some elected representation. So this जैसे उन्होंने थोड़ा सा Indians के लिए जो थे उनको reservation कर दिया था. So that was allowed, but not absolute. And of course, because it was our country, it is our right कि हमारे सारे के सारे elected members हमारे पसंद के हो, है ना? It's not a favor that the Britishers were doing to us, that by allowing some members or that were representative of the Indian people. So this is kind of what was going on at that time. So तब से इस चीज की बहुत importance है that people should decide who is ruling, people should decide who has the power, who is making the laws, who is implementing the laws, all these kind of things. Okay, so with the coming of independence, we were going to be citizens of a free country. उसके बाद हम लोग independent हो गए, thanks to the national movement, the freedom fighters of our country, जिनके struggle की वजह से now we are an independent nation. So but just at the start around 1947, आप सोच सकते हो, this is basically what happened in free India was that the governments could do what it felt like, but the government had to be sensitive to its people's needs and demands, right? So the dreams and aspirations of the freedom struggle were made concrete in the Constitution of Independent India that laid down the principle of universal adult suffrage, that is, all citizens of the country have the right to vote. So because under the British colonial rule, we had understood what kind of inequalities exist in India, what kind of people can be, how discrimination works. Isilay, we had a very, important kind of, this was a very important point in our constitution, that right to vote will be given to everybody. It will not be just given to the wealthy and, the people who had land or the people who had some sort of social class, या फिर सिर्फ Brahmins को they're given the right to vote. ऐसा नहीं होगा. Right to vote will be universal. ठीक है? So this was very important because आप logically भी सोचो आज की डेट में, if someone is poor or if someone belongs to a lower socioeconomic status or a lower so-called lower caste, that should not take away from them their basic right to vote, because they have an equal contribution in giving their input about who should rule the country, है ना? So this is a very important thread that is tying our democracy. That's why it is very important for people to decide who should govern. ठीक है? So people should decide because that's one of the principles of democracy. Equality जो है उसके बिना democracy exist नहीं कर सकती, इसीलिए the people should decide. Okay? So the next heading is that of people and the representatives.
Okay, so the takeoff point for for a democracy is the idea of consent and desire, approval and participation of people. मतलब जितने भी लोग इंडिया में हैं या किसी भी डेमोक्रेसी में होते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इफ एनी डिसीजन इज टेकन इन द कंट्री, द परमिशन ऑफ दोज पीपल, यू नो, ऑल द पीपल, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया इज टेकन. अब ऑब्वियसली लॉजिकली आप सोचिए कि ऐसा तो हो नहीं सकता दैट डोर टू डोर बिफोर मेकिंग एवरी लॉ दे विल गो एंड टेक कंसेंट ऑफ पीपल, राइट? इट इज वेरी इम्प्रैक्टिकल एंड इट विल टेक लाइक आई डोंट नो अराउंड 100 years to pass one law given our population. So an easier way of going about it is that have elections in various constituencies, and the elected representatives जो लोगों को represent कर रहे हैं, those people can directly, you know, work in functioning, in making the laws. ठीक है? So indirectly आप देखो कि they are basically representing the people only. And if people don't think that their elected representative did a good job, if you are not happy with your MLA or MP in your area, then obviously people have the power कि अगली बार हम उस पार्टी को या उस MLA को या उस MP को वोट नहीं देंगे. So ultimately the power lies in the hands of people, not the elected candidate. है ना? कितना ऐसा तो कभी नहीं होता दैट एक ही कैंडिडेट, अगर ऐसा होता तो हमारे तो 1947 से लेके अभी तक एक ही पार्टी के कैंडिडेट्स आए जा रहे होते. बट आप देखते हो कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे है, कभी बीजेपी आगे है, कभी कोई और लोकल पार्टीज इन्फ्लुएंस हो जाती है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज किसी भी एक पार्टी को एब्सोल्यूट पावर तो हम नहीं दे सकते, है ना? So if we think that we have made a wrong decision by voting for a certain party, then we have the right to change our minds as citizens, and that is the power we possess as the citizens of India over the people who rule us. ठीक है? So power ultimately is in the hands of people only. Okay, so people would elect their representatives to the parliament. Then one group among these elected representatives forms the government. Right? The parliament, which is made up of all representatives together, controls and guides the government. In this sense, through their chosen representatives form the government, and also they also control it. यही मैं आपको अभी समझा रही थी कि हम लोग अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्लियामेंट में भेजते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि किन्हीं एरिया के जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी मैं आपको अब्रीविएशन फुल फॉर्म बताना भूल गई पहले, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो शायद पार्टी पावर में ना हो. सो कैसे चलता है ये सिस्टम? इट्स ऑन द नेक्स्ट पेज, विच इज द नेक्स्ट हेडिंग ऑफ दैट ऑफ रोल ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है? यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हाउसेस के बारे में भी बताऊंगी, व्हाट इज लोकसभा, व्हाट इज राज्यसभा. ठीक है? तो इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फेथ दैट पीपल हैव इन इंडिया, इन इट्स प्रिंसिपल्स एंड इन डेमोक्रेसी. ठीक है? पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम has immense powers because it is representative of the people, and elections to the parliament are held in a similar manner as they are held for state legislature. So as I hope कि अब तक आपको पता चल गया होगा कि India has a total of 543 constituencies. तो यहाँ पर 543 elected representatives हो गए, वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, members of Lok Sabha, who are called MPs. ठीक है? To have a majority party, you should have at least half the number, which is 272 से ज्यादा. ठीक है? So out of 543, अगर आपकी 272 से ज्यादा seats हैं, then you have a good majority. That means कि आपको आपके ज्यादातर constituencies में, जो हमारी इंडिया की ज्यादातर constituencies हैं, उसमें एक certain party के candidates elect हुए. That means that party has the right to govern and rule. ठीक है? ऐसे होती है हमारी लोकसभा के elections. Okay? नाउ ये कोलिशन भी फॉर्म हो सकती हैं. बहुत बार ऐसा होता है मल्टी पार्टी सिस्टम है बिकॉज इंडिया, सो कोलिशंस भी फॉर्म हो जाती है. एक पार्टी के पास सीट्स कम है तो दे मर्ज विद अनदर पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट. So that's what sometimes happens. And then we come to executive. Executive क्या होती है? The people who are responsible for implementing the laws. तो अगर आपने कभी पोर्टफोलियोज के बारे में सुना हो कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, he is the leader of the ruling party, which is Honorable Prime Minister Narendra Modi ji as of now. And the Prime Minister selects the minister to work with him or her to implement decisions. These ministers then take charge of different areas of the government. So जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है, प्लीज अगर आपको डिफेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर नहीं पता है कंट्री के, प्लीज गूगल देम एंड फाइंड आउट देयर नेम्स एंड डू कमेंट बिलो. That's how it works. The prime minister is responsible for allotting portfolios to different kinds of ministers. तो किसके पास डिफेंस मिनिस्ट्री है, किसी के पास हेल्थ मिनिस्ट्री है, किसी के पास वुमेन इन वेलफेयर, जितने भी हमारी न्यूमरस काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है ना, ये सब किस किस के पास जाते हैं, दैट विल बी डिसाइड बाय द प्राइम मिनिस्टर. बट ये तो कहने की बात है, ओवरऑल पार्टी के इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स ही डिसाइड करते हैं कि किसके पास पावर जाएगी. बट हाँ, लीगली कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा है दैट प्राइम मिनिस्टर हैज टू डिसाइड. ओके,
Oftentimes in the recent past, it has been difficult for a single political party to get a majority in the required form of government. Well, fortunately, India has been in a situation where from the past, I think 10 years, now it will be 10 years, बीजेपी हैज वन एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. तो उनको किसी के साथ कोलिशन फॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी, जिसको कहते हैं एक लैंडस्लाइड विक्ट्री दे हैव अचीव्ड इन द पास्ट 2 इलेक्शंस. सो दैट इज ऑब्वियसली गुड डायनेस्टी फॉर अबाउट 10 years. दैट्स गुड. लेकिन जब जिस टाइम पर ये बुक लिखी गई होगी, ऑफकोर्स उस टाइम पे शायद एब्सोल्यूट मेजॉरिटीज नहीं आ रही होंगी. ठीक है, सो नो वरीज. आजकल है, आप अपने पेरेंट्स से भी पूछेगा. ठीक है, ये तो होगी हमारी लोकसभा की बात. लोकसभा में हमने एमपीज को इलेक्ट किया 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से. जिसकी मेजोरिटी आई उनका प्राइम मिनिस्टर बन गया, और प्राइम मिनिस्टर ने जो बाकी के इम्प्लीमेंटेशन के लॉज के रिक्वायर्ड हैं लोग, उनको पोर्टफोलियोज अलॉट कर दिए. अब ये हो गया हमारा लोकसभा, एक हाउस हो गया. दूसरा हाउस जो होता है हमारा पार्लियामेंट का, वो होता है राज्यसभा. ठीक है, इट फंक्शंस प्राइमरीली एज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट. राज्यसभा में क्या होता है कि जब आपके ये नेशनल इलेक्शन नहीं, जब आपके स्टेट के इलेक्शन हो रहे हैं. अब जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ फॉर एग्जांपल, तो मेरे दिल्ली के जब इलेक्शंस हो रहे हैं, तो जो मैंने एमएलएज अपने एरिया के एमएलए चुने हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, उनसे बनती है राज्यसभा. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो, दे आर ऑल्सो इलेक्टेड मेंबर्स ओनली, बट दे आर नॉट नेशनली एक लेवल पे वो इलेक्टेड नहीं होते, वो स्टेट लेवल के इलेक्शंस में जीते हुए कैंडिडेट्स होते हैं. ठीक है, तो दे कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन. A bill is and when a bill is required to pass through लोक सभा, ऑब्वियसली अगर किसी भी बिल को लॉ बनना है तो वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास होना चाहिए. ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं फाइनेंशियल बिल्स के लिए, जिसमें राज्यसभा में अगर वोट आउट हो भी जाए तो भी लोकसभा पास कर सकते हैं. बट 99% ऑफ द टाइम कोई भी अगर बिल को लॉ बनना है, इट हैज टू पास थ्रू नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा, एंड नंबर 3 द प्रेसिडेंट हैज टू साइन ऑन इट. ठीक है, तो द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड मेंबर्स of by the elected they are elected by the elected members of the legislative assembly of various states. ठीक है, तो हमने उनको इनडायरेक्टली, आप देखो हमारी ही रिप्रेजेंटेशन है, पर जो भी एमएलएज होते हैं एक एरिया के, उनमें से एक जो इलेक्ट होते हैं वो आपस में इलेक्ट करते हैं जो इनडायरेक्टली, तो वो लोकसभा में जाते हैं. डोंट वरी अबाउट द निटी-ग्रिटीज, क्योंकि आई थिंक इसमें ज्यादा मेंशन नहीं किया गया है, मैंने ऐसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता दिया. ठीक है, 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. ये वो मेंबर्स होते हैं जो आर डूइंग एक्सेप्शनल इन देयर फील्ड्स. फॉर एग्जांपल मूवी इंडस्ट्री से आजकल कौन राज्यसभा के मेंबर है, प्लीज अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए. आई नो इट, अदरवाइज आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट रोल ऑफ द गवर्नमेंट, विच वाज दैट ऑफ टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट. ठीक है, राज्यसभा तो अलग से बन गई, लेकिन जो हमारे पोर्टफोलियो मिनिस्टर्स हैं और जो हमारे बाकी के मिनिस्टर्स हैं, वो सिलेक्ट करना सबसे पहले हमारा नेशनल गवर्नमेंट जो सिलेक्ट करनी है, वो हमारा पार्लियामेंट का रोल नंबर 1. रोल नंबर 2, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट. ठीक है, एक होता है क्वेश्चन आवर. It is an important mechanism through which MPs can elicit information about the working of the government. ठीक है, क्वेश्चन आवर में हमेशा ये बात होती है कि जो बिल्स हो रहे हैं, जो कोई भी लॉ पास होने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें क्या शॉर्टकमिंग्स है, क्या क्या डिस्कशंस होते हैं. ऑपोजिशन के मेंबर्स बैठे होते हैं, वो हमेशा चैलेंज करते हैं कि नहीं आप इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, ऐसा करके बताते हैं. तो जो रूलिंग पार्टी होती है उनके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होती. They can get questioned because ultimately they are elected representatives. They are not, the lords of the nation. वो ऐसा कुछ नहीं है. Still the power is within the people only. तो किसी को भी absolute majority अगर हम दे देंगे तो वो तो dictatorship हो जाएगा ना. इसीलिए अभी डेमोक्रेसी में क्या होता है कि ऑपोजिशन क्वेश्चन करता है, ठीक है, या फिर पीपल कैन क्वेश्चन. ठीक है, वो उनकी एक क्वेश्चनिटी चेक जो होता है वो मेंटेन रहता है. अच्छा, asking questions to the government is a crucial task for every MP. The opposition party plays a critical role in healthy functioning of a democracy. I think अगर किसी डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन पार्टी बहुत ही लिमिटेड है, then that is not good for the health of a democracy. जैसे कि हमारी बुक में भी लिखा हुआ है, बिकॉज जो पार्टी पावर में होती है उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दे आर वेरी एब्सोल्यूट, जो एक अथॉरिटी है and no one can question them. ठीक है, then they will start passing arbitrary laws or help their friends out, या ऐसा कोई सिचुएशन आ सकता है. इसीलिए ऑपोजिशन पार्टी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. करंटली इंडिया में ऑपोजिशन पार्टी का रोल काफी लिमिटेड है बिकॉज उनको बिल्कुल भी सीट्स नहीं मिली हैं. सो होपफुली नेक्स्ट टाइम अगर ऑपोजिशन पार्टी अच्छे से आती है, देन दैट विल बी अ बिट बेटर फॉर द हेल्थ ऑफ आवर डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू NCERT क्लास 8. ओके, तो
what is the role of the opposition? They highlight drawbacks in various policies and programs of the government and mobilize popular support for their policies. ठीक है, एक डर रहता है उनको कि अगर हम लोग ने कोई उल्टा सीधा लॉ पास कर दिया, then the opposition can come वो एक popular support gain कर सकते हैं, या फिर they can just keep a check on the ruling party. Okay, so ये हो गया हमारा second task. Third task आता है उनका लॉ मेकिंग का. ठीक है, एज आई टोल्ड यू, लॉ कैसे पास होता है? सबसे पहले लोकसभा में मेजोरिटी से पास होना चाहिए, सेकंड नंबर राज्यसभा में मेजोरिटी से पास होना चाहिए, एंड फाइनली जाके प्रेसिडेंट जब साइन कर देंगे तब एक बिल, एक लॉ बनता है. ठीक है, बिल इज बेसिकली द प्रपोजल फॉर अ लॉ. ओके, सो groups and peoples that were till now unrepresented are beginning to get elected in the parliament. हम लोग उसकी बात करते हैं. तो लॉ मेकिंग आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने स्किप कर दिया है, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट चैप्टर. तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग पे, विच इज हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट. कौन है ये लोग? ठीक है, तो अब आज तक हम बात कर रहे थे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की, इक्वालिटी की, रिप्रेजेंटेशन की. इनफैक्ट जो हमारे जो पॉलिटिशियंस इलेक्ट होते हैं, दे आर कॉल्ड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना, किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बट द पॉइंट इज कि कितने व्हाट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आर गोइंग देयर, है ना. तो अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसे इमेजिन करो कि एक नेशन है, लेट्स से ए नेशन है, ठीक है, कोई भी एक नेशन है, उसमें अगर 95% पॉपुलेशन जो है वो एक सर्टन रिलीजन की है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी एक्सेट्रा, एनी बुद्धिज्म, एक पर्टिकुलर सेक्ट की आपकी 95% पॉपुलेशन है और बाकी की माइनॉरिटी में है. तो जब उनके यहाँ इलेक्शंस होंगे तो बट नेचुरली मेजोरिटी के लीडर्स ही 95% आएंगे, है ना. 95% ऑफ पीपल इन द पार्लियामेंट, मतलब ऑलमोस्ट, विल बी बिलोंगिंग टू दैट मेजोरिटी रिलीजन. ठीक है, तो जो 5% बच गए, जिनके कम मेंबर्स इलेक्ट हो पाए बिकॉज उनके पास वोटिंग जो एक शेयर था वो कम था, उन लोगों के लिए इट माइट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू स्टे इन द कंट्री बिकॉज इट्स नॉट वेरी फेवरेबल फॉर देम, राइट, क्योंकि वो लोग माइनॉरिटी में हैं. तो ऐसी सिचुएशंस बहुत अराइज होती रहती हैं. आप देखोगे हमारे यहाँ अभी भी ये बात है कि पॉलिटिक्स इज अ प्रिडोमिनेंटली मेल काइंड ऑफ प्रोफेशन. इट इज वेरी मच डोमिनेटेड बाय मेल्स. अगर आपके कोई भी इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं जो आपको पसंद है, तो आप उनका नाम अगर आप, इफ यू थिंक अबाउट इट, इवन इफ व्हेन आई थिंक अबाउट द इन्फ्लुएंशियल लीडर्स आई वुड वांट टू फॉलो, दे आर ऑल मेल्स. वेरी फ्यू इक्का दुक्का पीपल यू विल फाइंड दैट आर वुमेन. सो देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ रिप्रेजेंटेशन. वही जो 5% में मैं आपको माइनॉरिटी की बात बता रही थी, वही विमेन के साथ इशू है. वही हमारे SC ST OBC ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ रिस्क है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन के कितने लोग इलेक्ट हो रहे हैं. So with this in mind, some seats are reserved in the parliament for SCs and STs, and this has been done so that MPs elected from these constituencies will be familiar with and can represent Dalit and Adivasi interests in the parliament. ठीक है, इसीलिए हमारे पार्लियामेंट में एक रिजर्वेशन सिस्टम है कि इतनी सीट्स जो हैं वो उनके लिए रिजर्व हैं. सिमिलर रिजर्वेशन वुमेन के लिए भी बात चल रही है अभी करने के लिए. आई डोंट नो इफ दैट हैज दे हैव फॉलोड अप ऑन दैट और नॉट. वेल, लेकिन बात यह है कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स शुड गो. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन तो होनी चाहिए बट डिजर्विंग कैंडिडेट्स भी जाने चाहिए. So it is of this kind that force the country to ask certain and difficult and often unresolved questions about whether our democratic system is representative enough, right? So does our system consist of mostly majority religion जो हमारे यहाँ है उसके men, or are women going in, are minority women getting representation, are minority groups getting representation, are any other kind of communities, LGBTQ communities, any kind of other community is getting representation or not? So these are the essential questions which are unresolved but we must ask as citizens of the world's largest democracy. So ये बहुत ही एक important chapter है, that will teach you what the government has to do, the elected government has to do, what are its features, what are its functions, and how we still have the right to criticize it, how we still as citizens possess the power over those who we have elected. Okay, so I hope you have understood this chapter well. If you have any questions or comments, please feel free to drop them in the comment section and do subscribe to the channel. Thank you for listening to me.